So now I'm repeating this, proving again motion in a vertical plane. If any particle is moving in this plane, like this is a vertical plane, so we can take L be the radius of this circle, and here this is angle theta. Tension will always directed towards the center here, and here this is your mg. This is the component of weight, mg cos theta. Theta side will be always cos, and this is mg sin theta. And the velocity, the direction of motion is like this. So we can write like this: t minus mg cos theta, and whatever the resulting force will be, that resulting force will be equal to the centripetal force. So centripetal force equals to F equals to mv square upon r. Here in the place of r I am putting L. Okay. So T equals to M. Now I am taking the tension at the highest point. This is A. So MVA square upon L plus mg cos theta. Now the theta at the place of A, the theta will be 180 degree. Cos 180 is minus. So T equals to mv square upon L minus mg. Now mg is a constant factor. As the velocity of the particle will decrease, the tension will also decrease. So at minimum velocity, tension will tends to 0, or we can say that almost 0. Okay. So here I am taking the minimum velocity, and at the minimum velocity, the tension will be 0. So VA equals to VC, and VC stand for critical velocity. Critical velocity is the minimum velocity which is necessary to sustain this motion in the vertical plane. So T equals to 0, mvc square upon L minus mg, and here vc equals to under root gl. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes. So if this particle have the velocity less than under root gl, if the v is less than under root gl, then this motion is not possible. Then this particle can't go at this point if the velocity is less than under root gl. Okay. Now at the point A, let's do the energy conservation. Because as you see, know that energy is conserved at any kind of motion, in any kind of motion, at every point energy is conserved. So if the velocity will increase, then potential energy will decrease by the same amount, right? So let's take half mv square. This will be the kinetic energy, and here the kinetic energy of at point A, half mva square, right? And the amount by the kinetic energy increase and the potential energy decrease. So this resultant will be equal to the potential energy, and the formula of potential energy equals to mgh, right? The formula is mgh. Now tell me what we will take h, what will we will take height at the highest point A. What height I have to write here, I have to written here 2L. 2। देखो h तो है ही नहीं, इसका मतलब हाइट h के फॉर्म में तो होगी ही नहीं। अब बताओ वर्टिकल हाइट क्या होगी? आई एम गिविंग यू अ हिंट। L plus L cos theta. यस, L plus L cos theta. Good. Okay, so now here you can take half m common, v square va square, and this equals to mg L plus L cos theta. M same cancel. Now if what happened by there, if VA equals to VC, okay,
because at least this velocity will be equal to the critical velocity. Okay. So now put VA equals to VC, V square minus VC square, and here G L plus L cos theta. What is the value of VC? Under root GL. So V square minus under root GL whole square, you can write like this, GL plus GL cos theta, right? So V square minus GL, this will be GL and GL cos theta. Okay, so this will be 2GL plus GL cos theta. The velocity here will be 2 plus cos theta. Is this proving is clear? Is this proving is clear? One second, one more factor is here, that is 1 by 2. So this 2 will come here, right? This factor we missed. So this will be 3GL. And here 2. So I can write here 3 and here 2 cos theta. So V equals to under root GL 3 plus 2 cos theta. Is this proving is clear? Any doubt in any step? Now we can find the tension at point A by putting this value in the first equation. So the first equation of tension was P equals to mv square upon L plus mg cos theta, right? Here we can put the value of V. So put the value of V here. So T equals to M, V square है so under root cancel हो जाएगा, GL 3 plus 2 cos theta plus mg cos theta and L is here. Now you can write like this, T mgl multiply कर दो 3 mgl हो जाएगा plus 2 mgl cos theta plus mgl cos theta और upon में L, right? 3 mgl and 2 mgl cos theta and mgl cos theta. ठीक है, 2 mgl cos theta and mgl cos theta will be 3 mgl cos theta. So T equals to अपॉन में L तो है ही, मतलब पूरे के ही साथ में L कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर दो और हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 mg भी कॉमन आ जाएगा. सो 3 mgl पूरे ही कॉमन ले लो. So here 1 and here cos theta, 1 plus cos theta upon L. L से L cancel. This will be 3 mg 1 plus cos theta. So this is the value of tension. Is this clear? Is this clear? Everyone answer. How can you find the value of T or value of V?
Now you can verify with different condition. How can you verify? Let's see. Let's verify at highest point. सबसे पहले highest point पे verify कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा easy रहेगा. Okay. So all we find out that T equals to क्या है? 3 mg 1 plus cos theta. ठीक है. और V equals to formula क्या आया था? Under root GL 3 plus 2 cos theta. यही था. Okay. So at highest point, what will be the theta? Theta equals to 180 degree. Highest point A ही होगा, है ना? Theta equals to 180 degree. जरा theta equals to 180 degree put करो. So this will be GL 3, and here the value of cos theta, cos 180 degree is -1. So I am putting here -1. So this will be under root GL, और यही हमारा पहले भी आ रहा था. So this V equals to VC, critical velocity, under root GL. Now let's check the T. 3 mg 1 plus cos 180. थीटा की जगह 180 पुट कर देंगे, यहाँ -1 हो जाएगा. So 3 mg 1 minus 1, this will be 0. And this thing we are saying in that at highest point, when the velocity is equals to critical velocity, this tension will be minimum, almost equal to the 0. Is this clear? Is this clear? Yes, ma'am. Let's check on the lowest point. This will be your highest point. Let's check on the lowest point. Lowest point will be theta will be here 0 degree. So let's check. Velocity is your GL 3 2 cos 0. The value of cos 0 is 1. So this will be 2. So this is your under root 5 GL. And tension will be 3 mg 1 plus 1. So 2 or 6 mg. 6. Okay. Now let's take a point here also. If this is a point C, so here what will be the theta? At point C, what will be the theta? I am taking a point C here. 90. 90 degree. So now put the value. Theta equals to 90 degree at point C. Theta equals to 90 degrees. So the velocity will be GL and 3 plus 2 cos 90. So value of cos 90 is? Value of cos 90. बताओ भाई. Ma'am, 0. 0. So this factor will be 0. 0. Your velocity is 3 under root 3 GL. 3 GL. ठीक है. Now let's check for the tension. So tension T equals to 3 mg and 1 plus cos 90. So cos 90 will be 0. So 1 plus 0 will be 1. So this will be 3 mg. 3 mg. Tension will be 3 mg. So in this way, at different condition, we can find out the tension and velocity. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Now, here example is given. Example is saying
if a bucket containing waters, if a bucket containing water is revolved fast in a vertical plane, the water does not fall even when the bucket is completely inverted. Have you experienced this? Yes, कभी ma'am. ऐसा किया है? Yeah. करके देखो. मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि बकेट उठा के ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है. अगर अपनी चारों अगर अपने चारों तरफ भी घुमा दे, जैसे कभी किसी बच्चे को अगर हम झूला झुलाते हैं तो कंधे से उठा के नहीं चारों तरफ घुमाते हैं. अगर बकेट इस तरह से भी Yes. चारों तरफ घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जब वो मोशन ऑलमोस्ट इस तरह से होने लगेगा, तब भी कहीं ना Yes, कहीं ma'am. जो वाटर है वो सस्टेन करता है, उतना गिरता नहीं जितना उसे गिरना चाहिए. और एक पॉइंट ऐसा रहता है Yes. कि वाटर नहीं गिरता है. तो इसमें ये है कि अगर हम एक स्पीड, यहाँ एक स्पीड की बात हो रही है, उस स्पीड से अगर हम बकेट को जो वाटर से फिल है वर्टिकल प्लेन में भी अगर घुमाएंगे तो वाटर नीचे नहीं गिरेगा. अब इस कंडीशन को एनालाइज करना है. If there is a bucket, okay, and this will be the highest point, okay, so one force, that is weight, the weight is always directed towards the earth, and the force, centripetal force, will maintain it mv square upon, if I am taking this length is L. So the condition for not falling down of the water will be when this force will greater to this force, then only this water will not fall down, right? If this force is so powerful and this can prevent the water falling, so this will be the only condition. That means mva square upon L will be the greater or equal to the mg. यही कंडीशन हो सकती है, या तो ये बराबर ही हो. अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और वाटर वहीं सस्टेन करेगी, जैसा कि हमने बैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल में पढ़ा था. हैव यू रिमेम्बर? बैलेंस्ड फोर्स, इधर से भी कोई 5 न्यूटन से अगर पुल कर रहा है, इधर से भी कोई 5 न्यूटन से कर रहा है, तो बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट Yes, में ही ma'am. रहेगी अगर Yes, दोनों ma'am. तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है. ओके, सो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये इसके इक्वल ही हो या फिर ये फोर्स इससे ग्रेटर हो. अब इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है. Two conditions are possible if the centripetal force is equal to the weight and if the centripetal force is greater to the weight. So I can write like this, m से m cancel out कर सकते हैं. So the velocity will be, right, and we know that under root gl is the minimum velocity which is necessary to sustain this uniform circular motion in a vertical plane. And here you can see that this velocity should be equal to the under root gl or greater to the under root gl, that is greater to the vc. Is this example clear? Is this clear? This kind of question Yes, ma'am. asked in objective also, that in which case the uniform circular motion in vertical plane will be possible. VA is greater than VC, VA is equal than VC, VA is less than VC, or VA is greater or equal than VC. So VA is greater or equal than VC. The fourth one is correct. Now come to the objective. So this is all about the vertical plane. Okay, horizontal plane and vertical plane, both case we. Come to the objective. Let's see which question. प्रांजल बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे तुम?
मैम फिफ्थ वाला. ओके 1 सेकेंड, हम भी खोलने जाएंगे. Okay. So the fifth one, the ratio of angular speed of minute end and hour end of the watch. So we have to find out the ratio of the angular speed. Chalo. So the formula is 2 pi upon t. Okay, angular velocity 2 pi upon t. So let's take it omega 1 upon omega 2. किससे किसका रेशियो पता करना है? आवर एंड से एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर एंड. सो मिनट एंड आवर एंड. चलो, सो लेट्स टेक दिस इज 2 पाई अपॉन t1 फॉर मिनट एंड and this is 2 pi upon t2 for rn. So 2 pi से 2 pi cancel and here we can write t2 upon t1. Okay, t2 upon t1. Now tell me the time period of minute n and tell me the time period of hour n. What is the time period? Everyone answer. If normally this is your watch, okay, the normal watch 12, 6, 3 and this is 9. ठीक है. Now if this is your hour end, okay, so अभी कंसीडर कर लो कि 3 PM हो रहे हैं, ठीक है, डे के. अब ये बताओ कि 3 AM तक जाने में, जब 3 AM होगा तभी वापस यहाँ पे आएगी, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो ये करने में से कितने घंटे लग जाएंगे? 3 PM से 3 AM तक आने में कितने घंटे लग जाएंगे? 12. So what will be the time period? 12 hour for the hour end. Let's talk about minute end. चलो भाई मिनट की बात कर लेते हैं. अब if right now this minute is end is at 12, now again this minute end will be at 12 after how many hours? ये मिनट एंड दोबारा 12 पे कब आएगी? कितने घंटे बाद आएगी? 1 hour. 1 hour. 1 hour. The ratio is 1 to 1. Is this clear? Yes, ma'am. Clear? वही अगर सेकंड वाली एंड के लिए पूछा होता तो फिर सेकंड वाले एंड से जज कर लेते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी किसी ने लगाया मैम था? 8th वाला. हाँ 8th वाला. 8th वाला. 8th वाला. A particle moving in a circular radius 25 centimeter at 2 revolution per second, and the acceleration of particle is meter per second. 1 second 1 second. ऐसा तो मेरे में कोई 8th क्वेश्चन है नहीं जो मैं 8th इसमें तो लिखा बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन विल इज पॉसिबल. एक मिनट में. ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हो कि कहीं और से कुछ पूछ रहे हो? कि जो मैंने भेजे उससे पूछ रहे हो, कहीं और से कुछ पूछ रहे हो? मैं आप ही ने जो भेजे उससे. तो उसमें तो ये 8th क्वेश्चन नहीं है ना. यस मैम 8th ही है इसमें तो. चलो अच्छा तुम रीड आउट करो तुम. हाँ बताओ. मैम a particle moves in a circle of radius 25 centimeter ठीक at है. a 2 revolution per. चलो सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. और बताओ Yes, 2 रिवोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है? per second. हाँ पर सेकेंड.
यानी कि 1 सेकेंड में हो रहा है ना. The acceleration of particle is meter per second square. What? The acceleration of particle in meter per second square. So we have to find out acceleration. Yes, ma'am. So acceleration, we have to find out acceleration. So what is the formula of acceleration? We can put v square upon r and r omega square. ये दोनों formula put कर सकते हैं. Yes, ma'am. Yes. So Yes, ma'am. 2 revolution in 1 second. Okay. 2 revolution in 1 second. So I can say 1 revolution is 1/2 second. This will be the time period. 1/2 second. Yes. So I can Yes, find yes, out ma'am. omega. Omega equals to 2 pi upon t. And 2 pi t की जगह place कर सकते हैं 1/2. So omega will be 4 pi. Yes. Now here Yes, you ma'am. can put the value 25 centimeter and omega square, so 4 pi square. So a equals Yes, to 25 multiply 4 का square 16 and pi की value होती है 3.14 और उसका square आता है almost 9.8 something कुछ आता है. वो अपना correctly judge कर लेना कितना आता है calculator वगैरह से देख के. और मैम इसमें आंसर पाई में दिया हुआ है. हाँ, इसमें आंसर पाई स्क्वायर में दिया हुआ है. पाई स्क्वायर में दिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है. फिर क्या आंसर दिया पाई स्क्वायर में बताओ. मैम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर या 2 पाई स्क्वायर. 8 पाई स्क्वायर 4 पाई. अच्छा ठीक है. पाई स्क्वायर. हाँ हाँ ठीक 4 है. पाई. नाउ दिस इज इन सेंटीमीटर. वी हैव टू चेंज इन इनटू मीटर. सो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे. ओके. एंड दिस विल बी 16 पाई स्क्वायर. 4 पाई का होल स्क्वायर 24 जा